Good morning, students. Today we are going to plot irrational numbers on a number line. We will learn how to place irrational number over a number line. So the first example we are taking from your textbook is example number 3, which says locate square root of 2 on the number line. Locate square root of 2 on the number line. In last online session, we have already learnt about how to construct a square root spiral. I think you have seen that video. If you haven't seen that video, see that video first. Then you can continue with this problem. So, locate square root 2 on the number line. The location of square root 2 on the number line, we have to mention where it is. So, square root of 2 lies between 1 and 2, we know. But we have to place it in the exact manner so that a point can be carried out on a number line. As you can see, I have already drawn a number line. Right side of the number line from 0 shows positive integer 1, 2, 3 and so on till positive infinity. Infinity means endless point. जो कभी मिल ही नहीं सकता, that is positive infinity. Why I have mentioned it as a positive? क्योंकि वो 0 के right side है ना, तो I am assuming कि वो positive infinity है. In the same way, left side पे -1, -2, -3 so on till minus infinity. कुछ great mathematicians ये बताते हैं कि ये minus infinity and positive infinity एक ही point पे connect करते हैं. But that हम उसमें नहीं जाएंगे. You have to mention positive infinity and negative infinity. Or since in a square root of spiral we need only positive values, so मैंने यहाँ की values I haven't mentioned. Okay, and that is totally fine. That is totally okay. उसका marks नहीं कटेगा. So initially square root of 2 we have to locate. We have to locate square root of 2 on a number line. How we are going to do that is square root of 2 can be right in the form of square root of 1 and 1. 1 plus 1. Yes or no? Okay. So 1 has to be horizontal and 1 has to be vertical. So it is very easy. First take 1 unit. एक यूनिट ले लो and make a dark line. Okay. From here, from end point, यहाँ पे मैं for your convenience I am giving it name as A and B. I am giving this point as A and this point as B. Done? Now, what you have to do, you have to draw a perpendicular. I have already told you in a last online session, to draw perpendicular, you can follow two methods. पहली मेथड है प्रोट्रैक्टर यूज करके 90 डिग्री ले लो, दैट इज द इजीएस्ट मेथड. इन केस यू डू नॉट हैव अ प्रोट्रैक्टर, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक अ राउंडर. आपको राउंडर लेना है. पुट योर पॉइंट, राउंडर का जो नोक होती है पॉइंट, ओवर अ पॉइंट बी एंड बाय टेकिंग एनी रेडियस, कोई भी मेजरमेंट लेके, कोई भी रेडियस लेके, यू हैव टू ड्रॉ अ सेमी सर्कल. यस और नो? यस. आफ्टर ड्रॉइंग दैट सेमी सर्कल, वो जो कंपास है, सॉरी वो जो राउंडर है, कंपास है, उसका आपको डायमेंशन चेंज नहीं करना है. एंड फ्रॉम दैट सेम कंपास यू हैव टू शिफ्ट पॉइंट फ्रॉम बी टू यहाँ पे. बी पे जो आपने नोक रखी थी उसको उठा के आपको यहाँ पे रखना है. डायमेंशन चेंज नहीं करना है. एंड यू हैव टू पुट एन आर्क. अभी यू हैव टू सक्सेसिवली टेक एन आर्क एज अ नेक्स्ट पॉइंट. मतलब यहाँ पे जो कट रहा है अभी उसी को पॉइंट लेके फ्रॉम द सेम आर्क यू हैव टू चूज एज अ पॉइंट एंड मेक अनदर आर्क. सो यू विल गेट दिस एज अ 60 डिग्री एंड दिस एज अ 120 डिग्री. अभी 60 और 20 डिग्री के बीच में हमें 90 डिग्री चाहिए. डोंट चेंज द डायमेंशन थ्रू आउट. तो बाद में कंपास से एक ऊपर के तरफ कट लगाओ and change the pointer to the here and take another point. So here you will get a perfect right angle. तो यहां से मैं एक perfect right angle बना लूं. Here and here. This as a arc point. So now you got a right angle line, perpendicular line
to the number line. Yes or no? Okay. Since we know 1 plus 1 is there, so 1 is horizontal and 1 is vertical. So here also from by using scale, यहाँ पे तो 0 to 1 है, so it is 1 centimeter only. For this, you have to take a scale और scale के measurement से you have to make as 1 centimeter mark. तो यहाँ पे मैंने 1 centimeter mark बना दिया. Now at this mark, A is here, B is here. So next point C you can choose over here. Yes or no? Now what you have to do, you have to join point C and point A with the use of a scale. तो A और C को connect कर दो by using the scale. Okay, I think you have learnt Pythagoras theorem. For this perpendicular right angle triangle, for triangle ABC, for triangle ABC, this you don't have to write. I am just explaining to you कि ये square root कैसे आएगा. So for this triangle ABC, you know that AC square according to Pythagoras according to Pythagoras, hypotenuse square, that means AC square is equal to AB square base square plus perpendicular or height square, BC square, that you have already learnt in 8th standard, I think. So you know that AB is equal to 1 unit. So here 1 square plus BC is also 1 square. So 1 square is 1, 1 square is 1, 1 plus 1 is 2. So AC square is equal to 2. To remove square on the AC's head, we have to take square root on both sides. So ये दोनों के साइड में AC square root ले लेता हूँ, left hand side also, right hand side also, and square root of 2. Square and square root will get cancelled. We have learnt in previous problem. तो यहाँ पे बच जाएगा AC is equal to square root of 2. ये सारी चीजें लिखनी नहीं है, you just have to understand कि ये square root of 2 कैसे आया. Are you getting my point? Okay. So now AC is equal to square root of 2. AC we have to find out square root of 2. तो ये square root का dimension हमारे पास यहाँ पे आ गया है. Yes or no? We have found AC as square root of 2. Yes. Now अभी ये जो AC है ना, AC वाली लाइन, उसको हमें बस सुला देना है. किसके ऊपर? नंबर लाइन के ऊपर उसको बस सुला दो. Since A, what you have to do? You have to choose a rounder, a compass, put a pointer over a point A. पॉइंटर को पॉइंट A के ऊपर रखे, पेंसिल को पॉइंट C के ऊपर रखे. टेक दिस डायमेंशन. यस. और उसके बाद आपको आर्क कैरी डाउन करना है, आर्क को नीचे लेके जाना है. सो व्हाट यू हैव टू डू? टेक एन आर्क टिल नंबर लाइन, नंबर लाइन तक उसको कट मारना है. सो टिल हियर यू हैव कटेड अ पॉइंट. तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2. ये जो पॉइंट है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऑन व्हाट? ऑन नंबर लाइन. दैट्स इट. यही प्रॉब्लम है. It is a square root of 2 which is been located on the number line. So your problem done here. Got it? So what we have done? We have one as a horizontal line, one as a vertical line. We have connected a point AC which is been equal to square root of 2, and that square root of 2 has to be drawn out on a number line by using compass or a rounder. So that point which cuts a number line by using an arc, that is a square root of 2 on a number line. Yes. So if they ask this as a problem, आपको बस ये graphical representation ही करना है, ये theory representation मत कीजिए. Okay. Only this thing you have to follow. And this thing if you do it also, there is no problem. If you don't do it also, there is no problem. ये understanding के लिए है. अगर ये नहीं समझोगे तो ये नहीं आएगा. Got it? Now we are moving for a
Next problem, which is a example 4. Moving on to the next example, which is the example 4. Locate square root of 3 on a number line. So as we know, square root of 3 can be write it as square root of 2 plus 1. Yes or no? Yes. To indicate this 2 plus 1, no, 2 square will be 4 and 1 will be 5, square root of 5. So here you don't have to follow this method. Here I am changing a method. Square root of 3 can be only denoted by root spiral. Root spiral के अलावा इसको indicate नहीं कर पाओगे. So what you have to do? You have to draw a root spiral. How you are drawing a root spiral? Step 1. Take 1 centimeter horizontal line. Done. Okay. Name it as point A and point B. Done. From point B, draw a perpendicular line. Draw a perpendicular line. How you can draw it? There are two ways. पहला protractor use करो, directly 90 degree line ले लो, that is done. Second is use a compass, use a rounder, make a semicircle. एक semicircle बनाओ. उस semicircle के without changing the dimension, but change the point. वो point लेके एक arc यहाँ पे, दूसरा arc यहाँ पे. Still you don't have to change the point. Take one arc over here from point this and take over our point arc here by choosing this as a arc. So that is how you will get a perpendicular line. Since A to B is 1 centimeter, again from B by using scale take 1 centimeter. Mark this point as a point C. Join point A and point C. So point A and point C, since 1, 1, so it will be square root of 2. It will be square root of 2. Now for square root of 3, what you have to do? You have to extend this line AC. AC को ना यहाँ से थोड़ा सा लंबा करना. Extend this line from AC. C से थोड़ा उसको आगे बढ़ा दो. There is no issue. And then what you have to do? From point C, यहाँ पे ऐसे protractor रखो. Are you getting my point? ऐसे क्रॉस में प्रोट्रैक्टर रखना है. इस लाइन को कंसीडर करके प्रोट्रैक्टर रखना है. एंड चूज अ 90 डिग्री लाइन. और 90 डिग्री लाइन को चूज करो. यू हैव टू चूज 90 डिग्री लाइन. ये भी 90 है. इट इज ऑल्सो 90. सो आफ्टर चूजिंग दैट 90 डिग्री लाइन, हियर B से C जितना लिया है उतना ही C to D लेना है. सिंस B to C is 1, here also you have to choose 1. So here also it is 1 centimeter. Okay. A, B, C is here. So you can write D over here. Now what you have to do? Join point D and point A together. Point A से point D को connect करो. Now here square root of 2 is there. Square root of 2 and 1 is there. So 2 plus 1 is square root of 3. इसको मैं ऐसे भी छोड़ सकता हूं, बट आई डोंट वांट टू लीव इट लाइक दिस. कंसिडर करिए ट्राइंगल ACD. ट्राइंगल ACD. तो ACD में राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है? इट इज C. वेयर एंगल C is equal to 90 degree. Yes or no? Yes. Since it is a right angle triangle, we can apply Pythagoras theorem on it. So what does Pythagoras theorem says? Hypotenuse square is equal to base square plus height square. So can we write AD square? AD square is equal to AC square. AC square plus CD square. We know that AC is equal to square root of 2. So square root of 2 to the whole square plus CD is equal to 1. So 1 to the whole square. We know that square and square root will get cancelled. Square and square root will get cancelled. So here we are getting 2. 1 square is 1. 2 plus 1 is 3. So AD square is equal to 3. Yes or no? So to remove this square over the head of AD, we have to take square root on both the side, LHS as well as RHS. So taking square root of AD square,
is equal to square root of 3. Square and square root will get cancelled. So AD is equal to square root of 3. अगेन ये आपको लिखना नहीं है, लिखोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में मार्क्स आपको मिलेंगे. सो AD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3. वी हैव प्रूव्ड ऑल्सो, हमने उसको प्रूफ भी कर दिया कि कैसे स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ रहा है. सो स्क्वायर रूट ऑफ 3 वी हैव गॉट फ्रॉम पॉइंट A टू D. A से लेके D तक का डिस्टेंस कितना है? इट इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 3. Now what you have to do? Take a compass, take a rounder, put a point of a rounder on a point A और दूसरा पेंसिल वाला पॉइंट है, put that point on a point D and take a arc till the number line. नंबर लाइन तक उसको आर्क लीजिए. एंड दिस आर्क, ये जो आर्क बन रहा है वो नंबर लाइन को वेर इट कट, जहां पे ये आर्क और नंबर लाइन कट रहा है, दैट पॉइंट इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 3. तो ये पॉइंट हो गया ना, वो है स्क्वायर रूट ऑफ 3 विच इज बीन लोकेटेड ऑन अ नंबर लाइन. सो आई थिंक दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो क्लियर टू यू. नाउ वी विल मूव ऑन टू स्क्वायर रूट ऑफ 5. Now we will move on to the third problem of exercise 1.2. Exercise 1.2, problem number 3, which says show how square root of 5 can be represented on the number line. अभी हमको square root of 5 नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना है. So again square root of 5 के लिए फर्स्ट मेथड इज कि रूट स्पाइरल से जाओ. रूट स्पाइरल से इनिशियली यू हैव टू कैरी आउट स्क्वायर रूट ऑफ 2, देन स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड देन यू हैव टू कैरी आउट अ लाइन. तो वो प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा, 3 मार्क्स के लिए पूरा टाइम चला जाएगा. सो अभी मैं आपको और एक मेथड बताता हूं जिससे आप कोई भी प्रॉब्लम बड़े इजी तरीके से कर सकते हैं. सो लेट अस टेक अ स्क्वायर रूट ऑफ 5. So for square root of 5, which is the smallest perfect square before 5. So 5 के लिए can you write which is the perfect square before 5? 1 square is 1, 2 square is 4, 3 square is 9. 9 is bigger than 5. So we can't choose 3. Yes, but 2 square is 4. Yes or no? 2 square is 4 and which is closest to 5. Yes or no? 1 square क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वो बहुत दूर हो जाएगा. But 2 square is closest to square root of 5, so we can choose it. So what I am doing? Can I write 5 as a 4 plus 1? Can I write like this? Yes, I can write like this. We know that कि 4 is a 2 square. 2 square plus 1. Can I write like this? क्योंकि वो perfect square है ना, so it will be easy. So what I am doing, I am writing 4 as a 2 square. So here I found square and square root can be cancelled and 1 will be as it is. Yes or no? Yes. To do so, अभी देखें, first value we are taking as a horizontal and second value we are taking as a vertical. तो आप ये गलती मत करना कि सर यहाँ पे 4 है, so we will choose 4. No. ये किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है. सो यू हैव टू चूज 2 and 1. सो व्हाट यू हैव टू डू, चूज 2 सेंटीमीटर ऑन अ नंबर लाइन. मैं क्या कर रहा हूं, नंबर लाइन पे 2 सेंटीमीटर ही सिलेक्ट कर लिया इनिशियली. रूट स्पाइरल में क्या करते थे, 1-1 सेंटीमीटर लेके ऊपर गए, बाद में दूसरा 1 सेंटीमीटर लिया ऊपर गए. नो, हियर हम क्या कर रहे हैं, उसको तोड़ दिया हमने. 5 is been broken down from 4 plus 1. 4 is the square of a 2. So I have choose 2 over the horizontal line. Now here on the right side vertical line is 1 centimeter. So here you have to choose 1 centimeter only. This has to be perpendicular. Perpendicular के लिए मैं घड़ी घड़ी वो process I will not repeat. कैसे करना है? First protector or else rounder. So here put a point as A
here point as B and here point as C. Yes or no? Now what you have to do? Connect point A and point C. So AC will be square root of 5. AC will be square root of 5. Again, if someone asks, sir, ये square root of 5 कैसे आया? So we know that AB is equal to 2, BC is equal to 1. Use Pythagoras theorem. AB square, that is 2 square, that is 4. BC square, that is 1 square, that is 1. 4 plus 1, that is 5. Take square root both the sides, so it will be square root of 5. So we have found AC as square root of 5, which we are asked. So now what you have to do, you know it. Take rounder, put your pointer on a point A, pencil on a point C, and make one arc on a number line. Make one arc on a number line. That arc is been cutted a number line on which point, that point you can indicate as square root of 5. Yes, easy. I think it is more easy compared to the root spiral. But root spiral also you have to learn, because till root 3 तक तो आपको root spiral यूज करना ही है. बट मेरा सजेशन ये है कि आप रूट स्पाइरल पूरा जब तक बनता है ना, यू हैव टू मेक इट. बहुत मजा आता है. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो. तो मजा आता है तो करना ही चाहिए उसको. सो नाउ आई एम गिविंग यू वन होमवर्क. what you have to do, you have to indicate square root of 11 on the number line. ठीक है, मैं इसको हिंट भी दे देता हूं. 11 कैन बी राइट इट एज अ 9 plus 2. yes or no? why? because 9 is a perfect square और वो 11 के क्लोज भी है. 3 square is 9 which is closest to 11. तो ये यहाँ पे मैं 9 ले लिया. 9 plus 2. अभी now you know that 9 is a perfect square of 3 square plus 2. yes. so horizontal line पे how much centimeter you will take? on a horizontal line you will take 3 centimeter. on a vertical line how much centimeter you will take? 2 centimeter. तो यहाँ पे 3 और उसके बाद 2 ज्वाइन करो लाइन को और आर्क बना दो. you will get square root of 11 on a number line. is it easy? yes, it is easy. so practice it well. और ये अगर कर लो तो मुझे बताओ, और नहीं कर पा रहे हो तो भी मुझे बताओ, so I can resolve this problem again. okay, so in next online session we will do some different geometrical problem. till then, thank you so much and practice well.